students, welcome to Listen and Learn. Today we are going to complete question 1 language study for standard 9th and 10th for 10 marks. Students, it's very sure that if you read the beats in this question properly and practice them, you can definitely solve them on your own. This question doesn't require a special study. Whatever you have studied up to 8th standard would be very useful to score 10 out of 10 marks. Let's see question 1A. Do as directed. Any 4 beats you have to solve for 8 marks. 6 beats are given in question first A. First one. Complete the following words by using correct letters. Words with missing letters. Little, start, health, dress. Very familiar words are given in this beat. What you have to do? You have to enlist 5 to 6 letter words every day in your notebook or do reading practice every day. You can easily complete the given words. Okay. Then second one, arrange the following words in an alphabetical order. A group of 4 words is given here and you have to write them in the order of A, B, C, D. Glory, street, amount and pleasure. Rearrange them in alphabetical order. Amount, glory, pleasure, street. K. A, then G, then P and then S. Second alphabetical order, it begins with the same letter T. Then what to do? First letter of all the words is same. Then go on second letter and see how it comes. Table. T-A-B-L-E. A is the second letter. So, this is the first word in the alphabetical order. Then test, then throw and then time. Take 4 words beginning with the same letter and then rearrange the sets in alphabetical order. Okay. Then third beat, punctuate the following sentence. It's a very simple thing for you because from 5th standard we have been taught that first letter of every sentence is capital. Then when we read the sentence, what a strange appeal. We understand that it is an exclamatory sentence. So what we have to do? Begin the sentence with capital letter, what a strange appeal, and put an exclamatory mark at the end of the sentence. Then second one, but I don't know what you like. Don't carries apostrophe comma. I is always capital. Whichever is the place of I in a sentence, it's always capital and then full stop at the end. Begin the sentence with capital B. But I don't know what you like. Write other 10 to 12 examples of sentences containing 4 to 5 words and punctuate them in your notebooks. Take the sentences from your textbook and try to punctuate them on your own. Then fourth beat, make any 4 smaller words minimum of 3 letters using the letters in the given word. दिए गए शब्द में जो लेटर्स आए हैं उनका प्रयोग कर आपको कम से कम 3 अक्षर के वर्ड्स बनाने हैं मीनिंगफुल. नॉट, डॉल, ट्रू, डॉट, कंट्रोल, सेल, टेल.
take any longer word and try to find out hidden words from the given word. Sometimes or most of the times compound words are given like homework, playground, etc. And then it's very easy to find out 4 words from the given words. 2 words are already there. Playground, play is there, then ground is there, then round is there. This activity is full of enjoyment. Okay. Then 5th one, complete the web with related words. दिए गए शब्द से संबंधित शब्द लिखने हैं. मिल्क, मिल्क से रिलेटेड वर्ड्स. आइसक्रीम, बेबीज, हेल्दी, मग, cream, curd, sugar. 7 words I have written here. In the exams, you have to write only 4 words. Do practice of related words for the words like tea, garden, family, school, birds, sky, etc. From 7th standard, you have been given this activity. Then 6th one, complete the word chain of verbs. Sometimes you may have the word chain of adjectives, word chain of nouns. What we have to do? You have to learn or enlist verbs, nouns or adjectives beginning with each and every alphabet in your notebook. Then you can easily complete this word chain. Eat, then T से tell, L से like, earn begins with E and neglect begins with N. You can write other verbs here. जैसे T से talk, then K से keep, P से put, and then again T से tell. जैसे हम अंताक्षरी खेलते हैं उसी तरह से आपने यह वर्ड चेन कंप्लीट करना है. Then question 1B, do as directed any one for 2 marks, either first one or the second one. In first there is A and B, and in second one also there is A and B. फर्स्ट A में आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है. फ्रेज दिया हुआ है यहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ. आवर स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ मिशन हॉस्पिटल. कोई भी फ्रेज जो आपके टेक्स्ट बुक के लेसन्स में है. To look for, to wait for, on the behalf of, to be fond of, and many other phrases are there in your course book. So enlist them and frame at least one meaningful sentence for each phrase. Okay? Then B में आपको क्या करना है? Clause का यूज करना है और दिया हुआ मेन क्लॉज के साथ आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड कर कर सेंटेंस कंप्लीट करना है. आई नो दैट मीन्स आई नो समथिंग. लेकिन आपको यहाँ पर एक सिंगल वर्ड नहीं लेना है, एक सेंटेंस लेना है जिसका अपने आप में इनकम्प्लीट सेंस हो. देखो मैंने यहाँ पे लिया है, आई नो दैट यू वॉन्ट टू डू योर करियर इन स्पोर्ट्स. अब यह सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? दैट यू वॉन्ट टू डू योर करियर इन स्पोर्ट्स. यह अगर मैं कहती हूँ दैट यू वॉन्ट टू डू समथिंग, तो वह इनकम्प्लीट सेंस होगा, उसमें मीनिंग नहीं होगा. और जब हम पूरा इस तरह से सेंटेंस लेते हैं तो वह मीनिंगफुल हो जाता है. ओके. देन सेकेंड वन, A and B. Either you solve one or second. Add a prefix or suffix to make a new word. दिए हुए शब्द को सफिक्स या प्रीफिक्स लगाकर नया शब्द
बनाना है। क्लियर से क्लियरली, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पॉसिबली ले सकते हो, पॉसिबिलिटी ले सकते हो। और इस तरह से मैंने सफिक्स और या प्रीफिक्स जोड़कर कई सारे शब्द बनाकर आपको इसके पहले एक वीडियो में दिए हैं। लिसन एंड लर्न कि उस लिंक पर जाओ, मेक एड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स, और वह वर्ड्स बनाने की प्रैक्टिस करना है आपने। देन बी में है 2 वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर, इंटरेस्टिंग, फ्रेश। इनसे आपको मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रेम करने हैं। जैसे दिस स्टोरी बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक टू ड्रिंक फ्रेश फ्रूट जूसेस। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यह जो फर्स्ट ए में वर्ड्स दिए हैं, बेसिक वर्ड्स, और जिसमें से आपने प्रीफिक्स और या सफिक्स ऐड कर कर जो नए शब्द बनाए हैं, इनका ही प्रयोग आपको किसी एक का मीनिंगफुल सेंटेंस में करने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, इस तरह से सारे बिट्स इजी है। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू डू practice for this question from the SSC board papers for last 4 to 5 years and go through your textbooks, read the lessons, do not go on learning only. Okay, practice it, you will easily get 10 out of 10 marks. We shall meet with a new video very soon. Don't forget to comment your views in the comment section of the video. Thank you.